सर अभी आप आए भी गए कुछ दिन।
सर कितना टाइम है सर को? हेलो। हो रहा है।
राजू का चल रहा है ग्रीन टी बनाओ बॉस पूजा दोगन ने ग्रीन टी बनाया तो थोड़ी कुछ लाइट स्नैक्स में विकास आवाज येतोय का ठीक है आपका मेरे से डर लग रहा है एक बार नींद आती है दिन भर आज तो पूरा दिन Guys, please mute yourself. गुड इवनिंग विकास येतोय का आवाज हेलो Good evening, Yes, sir. sir, you're Abhijit audible. here. Yes, आवाज येतोय. Abhijit, kindly start the session and mute everyone else. विकास पोरं निघून गेले काय लय लेट झालं मला येता येतात हा थोडस झालंय काय नाही अभिजित ते बाकी Hello. सगळ्यांना म्यूट कर आणि चालू करून दे session. आपले सगळे मराठीच आहे ना मोस्टली नाही नॉट नेसेसरी अबे Am I audible? नॉट नेसेसरी तुझा आवाज yes येतो आता yes येतोय you are आवाज. audible Yes. I कर think चालू na, कर. it is better कि they will ask question and will answer na. I think you are given a general No, let Abhijit orientation about provide some introduction so that students can get an idea that what exactly is the agenda and little bit information about you also. okay हाँ Yes, Abhijit, continue. Hello. Hello. Good evening, aspirants. So we warmly welcome Niruti Awad sir, who is currently an IAS officer, and he's also been an Indian Revenue Service earlier. A very our own senior who has taught us sociology as well as anthropology, and we are thankful to give us to spare some time and guide the future aspirants. Sir, Swaraj IAS welcomes you, and I hand over to you. And please share your valuable inputs with our aspirants, sir. Thank you. Thank you so much Abhijit I Yes. think most of the people must be knowing me also I have seen some of the known faces so it is brief about my introduction, but I have cleared Avikas and we have cleared almost six prelims with very good margin. So I feel what are my learnings? I will just share in 2 minutes. I don't want to give a general philosophy and I don't want to waste your time. I'm sorry for being late. I was stuck up with some commitments. So I think two things you should remember to clear the prelims. You should able to understand the psychology of the examiner. And that is only possible by doing a meticulous analysis of previous year papers. Now you are solving so many mocks of Vision IAS and whatnot, right? So many coachings are there, you know that. But I don't think that it is going to help you in clearing the exam. To clear the exam, you should understand that there is a perceptible shift in the pattern since 2018. If you're able to understand the kind of question UPSC is asking and option framing. Now people are like very much anxious because in 2023 only pattern started. But again, I think we are missing the core problem. Core is same. The kind of statement they are making, like if they are giving statement one, statement two, those kind of things. So they are almost same, content-wise same. So don't be worried about the peripheral changes or superficial changes in the form of only one, only two. That should not be the worry. Second, I think you should understand there are certain high-yielding variety or what you call as broader themes which are being repeated every year. If I'm not wrong, MSP, Kisan credit card. Like I'm just knowing, no, sir, Buddhism. These are the like many themes which are being repeated every year. If you teach 16 paper, 14 paper, or 23 paper, there are certain things that are being repeated. They will not ask question verbatim, but crux is same. KCC they will ask in a different way. Which of the following
activities for which they will be giving loans. So I think first, to understand the psychology, understand the previous year question, and don't analyze it through some guide like only IS has provided. No, download UPSC paper, take a printout, or if you're a tech savvy, go to your iPad or Samsung tab and solve it on your own. And then after see what is going wrong, what should have been my approach to understand the question, because it's very easy to comment post mortem. यार खूब ये बहुत easy paper था, तब तो लगा नहीं, but people who are able to manage pressure, they are able to clear the exam. It is not up, and the people who are sincere aspirants, they are failing because of one or two questions. So you understand that ki, unless and until you know the psychology of examiner. And second, the D-Day is very important, because whatever preparation you are doing, whether from Lakshmikant or other static sources, that is just 50% part. That is just eligibility criteria, or you are qualified for that. But after that, who are going to crack the exam? That is my second point, that people who are able to manage D-Day efficiently. What is efficient management? That is very important. Last year, many people failed because of seeing a radical departure from the past. That they started asking only, and I think they focus only on only. But if you see, the questions were very easy. I know CSAT was definitely tough, but GS wasn't that tough. We would have failed. And if paper is tough, it is very good for people, for the reason that cutoff will go down. Cutoff will go down if paper is tough. So don't be worried about that. So this is what two things which I feel that to understand the psychology, go for UPSC previous year paper. And second, management of data. I think in time to come, we will have more aspirants joining us. Then we'll have a more discussion. Sorry, because we are not able to manage time, and due to work, I don't know, Vikas is also busy, I'm also busy. So we are not able to find a proper schedule. And in that, I think rather than going for n number of mocks, like 50 mocks, this will be the question. Yes, sir, 50 मॉक सॉल्व किए फिर भी प्रीलिम नहीं हो रहा है भाई, किसके मॉक सॉल्व करे? मॉक बनाने वाले लोग कौन है, ये भी सोचो ना। आप लोग कभी ये सोचते नहीं, शेयर इन ओल्ड राजेंद्र नगर, यू बिकम अ विक्टिम टू दैट इंफॉर्मेशन ओवरलोड। भाई कुमार के वहाँ जेरोक्स सेंटर में गए, वहां नया कुछ दिख रहा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया। सो डोंट बिकम victim of it. Otherwise, what will happen? Same things are being, recycled in a different way. So don't become victim to that. Focus first on fundamentals. So what should be the brief timeline? By the end of March, you should complete your statics syllabus. So what is statics syllabus? Everyone knows. Current part is little bit part of, environment and science and tech, which is current. Then some IR ka part, like places in the news and all those things. They are like 10 to 15 or 20 questions. For that, you can go through PT 365 or any other only IAS, IAS. Their notes are good, but static, at least polity, economics, geography. In that, you can do diversification. If I feel in geography, like Majid Hussain is a good addition in order to understand different मैपिंग ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के जो आजकल पूछ रहे कोबाल्ट का कहाँ ज्यादा मिलता है या वट एवर इट इज ना, सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन इजीली टैकल फ्रॉम book like Majid Hussain. If you want to do some value addition, I think everyone is going through Lucent JK. Lucent JK is a good thing. Instead of going to Satish Chandra for Medieval India, go through Lucent JK. So such kind of small changes you can make in your preparation. And more than that, we will have one more session because and we will be taking how to solve a paper. I think we both have cleared the exam so many times. So there is a certain, tried and tested strategy that actually works in UPSC. So that you should not forget. And now don't just focus on solving multiple mocks. Focus on completing the static syllabus. That's, I think, very important. Don't go for even sectional tests. That doesn't really help. If you want to join any mock, just go for 10 to 15 comprehensive tests and start with like mid March to April end. You finish your 15 or 10 tests of comprehensive nature in 1.5 months. That's it. Don't go for all this sectional, and solving 70 and 80 is not a target of UPSC. Never ask that कि आपने कितने मॉक सॉल्व करके आया, आपने वाजिरम लगाया था या विजन लगाया था या नेक्स्ट आईएससी. इट इज इमटेरियल फॉर यूपीसी. यूपीएससी की हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आने चाहिए. फॉर दैट नोबडी हैज रिकमेंडेड कि इतने बुक्स पढ़ने, कोई भी जरूरत नहीं. 5 to 6 स्टैटिक बुक्स आर देयर, एंड करंट अफेयर थोड़ा भाई पूरे साल पढ़ते होते एक रफ अंदाजा आ ही जाता है आपको. एंड क्वेश्चंस आर ऑफ सुपरफिशियल नेचर, दे आर नॉट आस्किंग इन डेप्थ क्वेश्चन. सो योर स्ट्रेटजी हैज टू बी वेरी एक्सटेंसिव. You should able to cover multiple topics, but in a superficial manner. It's not easy to understand science and take in deep. There is no need. Nikita to meeting chat. What's practice करने के अलग अलग तरीके. You devise revision strategy. Suppose take example of spectrum. एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, then next time start with just index.
Third time, start with appendix. Fourth time, start with any favorite chapter. So these are the different ways you can revise. And those who are having really time, तो थोड़ा थोड़ा सेक्शनल कर लो. बट आई विल नॉट recommended कि भाई तुम 50 सेक्शनल करोगे फिर 20 ये करोगे तो तुम्हारी आधी एनर्जी उसमें जाती है. आई नो पीपल विल से दिस इज द best strategy to revise. I don't think this is the only strategy. There are different strategies. Instead of that, you spend more time on एनालाइजिंग यूपीएससी पेपर्स ना. एक पेपर को 4 4 6 6 घंटे करो. आज 2 घंटे किया, कल 2 घंटे किया. इससे क्या है ना, यूपीएससी का पूरा ब्रॉड एंगल से व्यू भी आ जाएगी, बर्ड्स आई व्यू भी आ जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन ब्रॉडर थिंग्स. उसी पे यूपीएससी बहुत ज्यादा फोकस करती है, वो कर लो. बहुत ज्यादा तो ऐसा कुछ टफ है नहीं. आज भी पॉलिटी के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं. हम वो कर, और मॉडर्न इंडिया बहुत टफ होता जा रहा है. तो भाई तुम कितनी प्लासी टू पार्टीशन करो, उसमें से 3 सही सही आ जाएंगे. उससे अच्छा लक्ष्मीकांत अच्छा कर लो, उससे अच्छा इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्लियर कर लो. देखो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी आपको देखना आना चाहिए. आई नो कि भाई आई डोंट रेकमेंड मिडिवल इंडिया. तुम सतीश चंद्रा पढ़ने के बाद भी यू विल नॉट एबल टू सॉल्व मॉडर्न मिडिवल इंडिया. तो इससे ज्यादा मैं एनर्जी दूसरे सब्जेक्ट पे लगाऊंगा. मैपिंग के लिए, यस, मैपिंग के लिए तो एटलस तो देखते ही हो. माजिद हुसैन से इंडिया की मैपिंग अच्छी हो जाएगी. बाकी देर आर सर्टेन यूट्यूब वीडियो जिसपे आजकल जो न्यूज में आती चीजें, उसके मैपिंग के लिए वीडियोस देख सकते हो. जब रात में बोर हो गए, जस्ट टू चेंज योर मूड, और 1 घंटा बस से बोर हो गए, तो मैप देख लेना. क्योंकि मुझे लगता है इंसान की विजुअल मेमोरी इज वेरी गुड, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन यू कैन आस्क. दिस इज अ जनरल ज्ञान फ्रॉम माई साइड. नाउ यू कैन आस्क. Sir, must things for prelims to qualify. I said, understand the psychology of examiner. Second, whatever you are doing, practice if you want to do, it should able to help in developing temperament to clear the exam. ये बहुत जरूरी है. आप विजन के पेपर में बहुत कम आ गए, डिमोटिवेट होके बैठोगे, कोई मतलब नहीं. आप बहुत ज्यादा आओगे, बहुत ज्यादा नंबर आएगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होके, दैट इज नो. यू शुड हैव बैलेंस. CSAT comprehension, how to solve accurately. I think it has been a it's very tough question. By comprehension का तो अपने आप ही तुम सीख जाओगे. comprehension मुझे लगता है मास्टर करने के लिए ना, go through 5 to 6 year of CSAT के पेपर, जो यूपीएससी के PYQs है, उस पे थोड़ा सा फोकस कर लो. आई थिंक इम्प्रूविंग, इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग इंग्लिश और हिंदी, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड इजीली. और उसमें पूरा परफेक्शन आएगा नहीं, क्योंकि सेंट्रल थीम हो या फिर कुछ भी हो, बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है. इकडे चालले त्याचं सगळं मन इकडे लागले. Any other question? Ashok, GS is 121, absolutely nice. CSAT भाई कोचिंग लगवा दो कोई. अशोक, कोचिंग लगवा दो. तुम्हें जब पता ही कि तुम्हारा GS बहुत अच्छा है, एंड स्टार्ट डिवोटिंग लाइक 2 hours 3 hours पर डे फॉर CSAT. CSAT में भी यार देखो, क्वांट के कुछ क्वेश्चन है, हर बार पूछ रहे, प्रोबेबिलिटी वाले है या फिर इंटीगर वाले जो क्वेश्चन है, 8 10 क्वेश्चन वहां से कर लो. 4 5 लॉजिकल रीजनिंग के करो. 10 15 वहां के हो गए. कॉम्प्रहेंशन में 20 तो सही आ जाते, 30 में से इतना तो बेसिक आना ही चाहिए. तो एक 50 के आसपास क्वेश्चन का स्ट्रेटेजी बना के रखो, तो उसमें से 27 28 नेट करेक्ट आ जाएंगे. CSAT का प्रॉब्लम ये भी हो जाता है कि अपनी नींद भी प्रॉपर नहीं होती, और GS हमेशा टफ लगता है. तो मेंटल एग्जॉशन भी एक मेजर रीजन है. और सेकंड, बीच में जो हम डिस्कशन करते हैं यार, GS का ये सही होगा, ये गलत होगा, इस चक्कर में भी हमारी काफी एनर्जी उसमें निकल जाती है. तो डी डे मैनेजमेंट पे CSAT का जो है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, वो तुम अच्छे से मैनेज कर लेना. और अभी 2 से 3 घंटा, जैसे पीपल लाइक अशोक, उनको GS बहुत सही आ रहा है, तो उनको CSAT के लिए 2 से 3 घंटे से ज्यादा. थैंक्स. और तुम खुद को एक इंट्रोस्पेक्ट करो ना, एक क्वेश्चन पूछो, लाइक GS को हम जितना टाइम दे रहे हैं, आर वी एबल टू डिवोट दैट मच टाइम फॉर CSAT? दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू आस्क टू योरसेल्फ. इफ आई एम रियली वीक in CSAT, how much time I'm devoting? And it's not a, don't play a sympathy game कि सर मैंने तो GS में बहुत सही किया था but CSAT में. Nobody is asking about it, right? People have gone to interview for many times. If they are not selected, nobody is asking them. So don't say कि सर हमने तो बहुत GS सही किया था but CSAT नहीं हो रहा है. No. So play a very balance, and UPSC is expecting that कि you should not be extreme. We should able to balance both the subjects. ये बहुत जरूरी है. अभी पहले हम लोग टाइम पे था तो बहुत कम करते थे, अभी बहुत ज्यादा कर रहे हैं. टाइम CSAT पे देना ही पड़ेगा. दुलारी, CSAT को मैंने बोला अभी, इफ यू आर फाइंडिंग CSAT तब, तो अभी से 2 से 3 घंटा देना शुरू करो. और जिनको लगता है दे आर वेरी वीक इन CSAT, तो दे कैन ज्वाइन एनी कोचिंग. वहां पे
लाइक इवन कैट की बुक्स भी पढ़ सकते हो अपन, कुछ कैट्स, मुझे नहीं पता कि कैट कितनी डिफिकल्टी लेवल है, बट नाउ डेज दे आर गोइंग फॉर अ टफर लेवल. Around 50 you should attend in CSAT, how to deal with long questions and change pattern. Change pattern के लिए मैं बोला तुम ज्यादा सोचो मत, तुम ब्रॉड थीम प्रिपेयर करके जाना. और थोड़ा डेफिनेटली विद चेंज पैटर्न यू हैव टू फोकस मोर ऑन रोट लर्निंग नाउ. ऑप्शंस पहले जैसे एलिमिनेट होते थे वैसे होंगे नहीं, तो यू शुड हैव परफेक्ट. तो जहां जहां जैसे हिस्ट्री हो गया, जहाँ पे एब्सोल्यूट फैक्ट्स मैटर करते हैं, ज्योग्राफी हो गया, वहां पे आपको बहुत ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा. तो फोकस मोर ऑन साइंस टेक कैसे कवर करें. साइंस टेक बहुत ज्यादा कवर मत करो. 2 साल के PT 365 कोई भी 2 कोचिंग के नोट से कर लेना, वो बेटर है. बेसिक साइंस तो सबको आता है, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ. और उसके बाद फिर साइंस टेक में ओवर थिंकिंग मत करना है. AI लेवल पे कर सकता है क्या, बिटकॉइन में ये हो सकता है क्या. बहुत ज्यादा साइंटिस्ट मत बनो. जनरल एडमिनिस्ट्रेटर के एंगल से सोच लो, ये चीज है ठीक है यार, इंडिया में ये हो रहा है तो इसका एप्लीकेशन ये हो सकता है. साइंस टेक में ओवर थिंकिंग नहीं करना. सेकंड, और कुछ भी नहीं आया तो 99% में डी मार्क करके आ जाना. गलती होगा और कुछ नहीं होगा, बट 99% टाइम इट विल बी करेक्ट. तो डोंट बी एन ओवर थिंकर इन केस ऑफ साइंस एंड टेक. और 2 साल के PT 365 या जो भी मिलता है वो अच्छे से पढ़ लेना. उसमें से वे टर्म्स वगैरह जो नए नए टर्म्स हैं. एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज्यादा आजकल बची नहीं आपके पास, इसलिए आपका नॉलेज बेस ज्यादा होना चाहिए. और रिवीजन से आपके पानी लाओ ना जरा. एनी अदर क्वेश्चन. Everyone's approach should be now to complete the fundamentals first, and then start revise second revision, third revision, and then you touch the subjective or uncertain areas like current affairs or science and tech का. But first complete your basics. जैसे environment का static है, economics है, geography है, history है, polity है. Do that. अभी मेंस मत करो निकिता. Don't do mains along with prelims. There are hardly 90 days left, so just focus single-mindedly on prelims. Newspaper should be continued till March end, I think. After that वैसा भी पेपर बन जाएगा तब तक. Any other question? Next time, Vikas, what we'll do that we'll solve the paper directly. Live paper solution will be better. I will be using some iPad so that we can share the screen, and how to understand the psychology will tell you practically. We'll Yes, coordinate time. Time का थोड़ा issue हो रहा है. नहीं कोई नहीं, we will have it in a closed group session and सर आपने यूपीएससी की स्टडी में कौन सी मिस्टेक की थी. बहुत मिस्टेक की थी. फॉर दैट विल हैव अ डिफरेंट सेशन. डी डे मैनेजमेंट टिप्स विल शेयर. अभी तो डी डे में भाई काफी दिन है, तो जब भी है तो अपन एज प्रीलिम्स विल कम क्लोजर विल टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज डी डे. जिसके 50-60 सेम मार्क्स में आ रहे हैं तो उस पर्सन को रिवीजन की ज्यादा जरूरत है. और एनालाइज करो कि भाई कौन से एरिया में तुम वीक है. शॉर्ट एनालिसिस करो खुद का. Vivek has asked the question that his question or his score is in the stagnation range ना, तो you need to rethink it, what is going wrong. Sir, current affairs should be tackled with PT 365 और एनी शून्य IAS वगैरह का जो नोट्स है उसमें से कर. Now Dev, who has asked the question, static should be given more weightage, because if you see the paper, out of 100 questions there will be 70 questions static, so your time has to be divided like that. And current में कितना भी करो, you can't change the boundary ना, you can't erase the boundary. मतलब current में कहाँ से भी कुछ पूछ सकता है. There is no certainty in current, but जो certainty है पॉलिटी इकोनॉमिक्स, उस पे तो अच्छा टाइम फोकस करो.
मैंने ज्यादा मैगजीन पढ़े हैं। लास्ट 2 weeks में तो नो सोल्यूशन ऑफ, यू शुड नॉट सॉल्व एनी पेपर इन लास्ट 2 weeks. यू शुड फोकस ऑन रिवाइजिंग सब्जेक्ट्स। और लास्ट लास्ट में पहले तो 2 weeks बचे, सपोज इमेजिन करो 14 days में स्टार्ट विद टफ सब्जेक्ट लाइक आर्ट एंड कल्चर, जो हमने बहुत बार पढ़ा है बट फिर भी याद नहीं रहता है। देन लास्ट के 2-4 दिन में इजी इजी सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री हम बहुत बार पढ़ते हैं, पॉलिटी, सो गो फॉर सच सब्जेक्ट्स। अभी तुम इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी जहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है वो सब्जेक्ट अभी अच्छे से कर लेना। आर्ट एंड कल्चर जिसमें बहुत फैक्चुअल डेटा याद करना है वो 14 डेज में टारगेट करना लास्ट के। हाउ टू रिवाइज स्टैटिक इफेक्टिवली, हर वीकेंड पे एक दिन दे देना, जैसे एक दिन पॉलिटी को दे दिया, नेक्स्ट वीक इकोनॉमिक्स, उसके बाद मॉडर्न इंडिया, ऐसे करके तुम टाइम डिवाइड कर सकते हो। Now, how many times we should revise? As many times as it is possible. I will say at least 5 times we should able to revise in the last 2 months. I think Abhijit, most of the questions have been covered. Next session will take practical session, how to understand the psychology of examiner by solving UPSC previous year paper and understanding how they're making options. I think that will be more useful rather than giving generic ideas or knowledge about the exam. I think as they're preparing, everyone is aware about all these basic techniques. Any technique to read CSAT passages fast? Practice reading from UPSC papers. Baha ki mat padho. If you are a regular The Hindu reader, that will also help in tackling your reading speed and all those things. Definitely 3 months are more than sufficient to qualify for prelims. No doubt about that. Provided how is your strategy. So understand that this exam is all about study plus strategy. So you'll be doing study like that is 50%, strategy is 50%. Sir, if you could please share some perspective on temperament as well as psychology, that would be beneficial. Because it's a very good question. What happened in 23? Most of the people failed because they have seen something different. It may be possible that UPSC may come up with some improvisation this year also. So be steadfast in your approach. कुछ भी हो जाए, if पढ़ के गए हो, so you should have that level of confidence कि यार मैंने इतना पढ़ा है, one of the best in India. ऐसा कैंडिडेट तुम्हें इमेजिन करना है, टेम्परामेंट बिल्ड होगा यूपीएससी के पेपर सॉल्व करके। और बहुत लोगों को लग रहा है कि सर आप मॉक को मना कर रहे, तो सॉल्व एटलीस्ट 10 to 15 कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, डोंट गो फॉर सेक्शनल एंड ऑल दैट। बिकॉज टेम्परामेंट बिल्ड होगा ना लैंग्वेज समझने के बाद, एग्जामिनर की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, दे शुड एबल टू अंडरस्टैंड लॉजिक कि भाई ज्योग्राफी में ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, साइंस में ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। या अभी जब तो फैक्ट नहीं देखेंगे ना, तो विकास नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस कि देयर आर सम 10 to 15 strategies to tackle to understand the psychology. जैसे पॉलिटी में, जस्ट टेक एन एग्जांपल, पॉलिटी में क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म डिफाइन नहीं है, देयर इज नो टाइम लिवन, तो ये टाइमलाइन दिया नहीं है या फिर डिफिनेशन नहीं दी, ये हर बार एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। Yes, and as you said about this 10-15 test, so 10-15 test actual stimulated environment is solved. Mind becomes consistent to the actual environment, so that builds up temperament, gives the control over yourself. Yes, they should start with mid of March to April में, जब तक खत्म हो जाएगा तब तक। टेस्ट का पर्पज यही है टू बिल्ड टेम्परामेंट, कि उससे कोई क्वेश्चन आएगा ये उम्मीद छोड़ देना। देयर इज a 1 trillion chance कि any question from mock will be repeated in UPSC. No, Nikita, I will not suggest you should do answer writing at the moment. You should focus more on prelims. As prelims is becoming more uncertain and unpredictable, you should focus more on prelims. With more knowledge, you'll be able to understand the pattern, statement 1 and 2 wala. It's not a big, when we'll be solving the paper, we'll be telling you that it's all knowledge based questions. ठीक है विकास, I think yes, I think mota yes, all the questions next time I think we both will take how to solve the paper, and if you really want to say something
you can add on from your side. No, I'll be taking a session tomorrow, more or less Yes. on similar lines as guided by you only. तो यही था, मतलब मोटा मोटा ये आपने जो अच्छे से बताया. If there is क्योंकि anything more, definitely we now can I we'll add feel ना those. people are crazy for solving mocks कि भाई next IAS is booming now, तो उनके पेपर अच्छे होंगे, forum के अच्छे होंगे. I think that is all myth है. You should able to understand that is illusion. Coaching industry will not able to compete with the ability of UPSC. That should be clear in the minds of aspirants. Thus, I think that is the And message I want to the drive home. objective as well as intentions behind solving these papers is why we solve it. Just for the sake of completion is not necessary. It is not necessary. Ashok, can you please mute yourself? Abhijit, mute. I think Vikas have very well summarized all these things that are important now. Yes. So I would like to thank you, Nivrutti sir, for your time. Also, and we would like to apologize to aspirants for the delay, but as he was occupied and already from his busy schedule. So next time we will solve the paper, and then Yes, yes. one more session we can take on D-Day. D-Day management, I think once 30 Yes. days are left for the exam, I think that will be appropriate time to talk about D-Day. Definitely. अभी तो पूरा syllabus manage कर लो. Definitely. Yes. And if there is Yes. anything more, we'll let you know regarding Yes, through yes. our mentorship program. If there is Sure. anything more, Yes, sir. Sure. Yes, Vikas. Sure.